जाने से पहले अब एक और अहम मुद्दा, जहां पर ताइवान मामले में अमेरिका चीन के बढ़ते तनाव के से दुनिया भर के जो जानकार हैं वो चिंता में हैं। जाने माने इमर्जिंग इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट एड्रियन मोवट का मानना है कि ये संकट टल जाएगा। वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर भी काफी बुलिश है। आपको सुनाए थे। I think it will be diplomatic theatre rather than anything that's of substance that starts to impact the economic outlook, corporate outlook. And we already are in an environment where there are quite a lot of stresses between the US-China relationship. We do have tariffs against Chinese goods. So I don't really see the actual fundamental situation deteriorating because of this. Remember that we had the leaders of both China and the United States on a phone call last week. I think there's probably a lot going on in the background just to try and ease some of the concerns out of this situation. If we look at India specifically, its inflation problem arguably is not as great as we're seeing in other countries. India typically has a higher run rate for inflation. And then if we look at the economic data, let's look at the PMIs that have been out in the last week. Those are showing that the manufacturing sector in India is quite robust. And that's been reflected, this better fundamental story for India has been reflected in a market for a dollar-based investor that's just down 5%. Versus minus 20% for emerging market equities and minus 15% for global equities. So I do think the underlying fundamentals for India are superior. तो इंडियन मार्केट्स की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है और जो पीएमआई के नंबर्स है वहाँ से भी काफ़ी बुलिश साइन, एक रोबस्ट स्टोरी दिखाई पड़ रही है। ये आप एड्रियन मोवट साहब को सुन रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार साहस बहू और सेंसेक्स दीपाली राणा के साथ। नमस्कार। के प्रायोजक हैं SBI प्री अप्रूव